Hello students, welcome back again in my class. This is Dr. Gagan here. Today we'll read another important topic of anatomy, that is hypophysis cerebri or the pituitary gland. Generally it is called as pituitary gland, but the another name of this gland is hypophysis cerebri. Okay, so it is also called as Piyush Granthi in Ayurveda. So what is actually this pituitary gland? It's a small endocrine gland which is situated in relation to the base of the brain. It is where it is situated? It is situated at the base of the brain, and it is often called as master of endocrine orchestra because it produces a number of hormones which controls the secretion of many other endocrine glands of the body. It is called as the master of all endocrine glands. Why? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ हॉर्मोन्स. ये बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन सिक्रेट करता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के, उसकी सिक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं. सो ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर कहा जाता है. सो व्हाट इज इट्स लोकेशन, वेयर इट इज लोकेटेड? द ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफिशियल फोसा और सेला टर्किका और पिट्यूटरी फोसा. इट इज कॉल्ड एज हाइपोफिसिस सेरेब्राई ना. सो द ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफिशियल फोसा. Where is this hypophyseal fossa? Just I show you in the skull. This is the skull, and this depression, this is the sphenoid bone, and this middle depression, ठीक है, just like this, just ये this is the depression, the middle of the sphenoid bone. This is called as hypophyseal fossa. इसके ऊपर ब्रेन रखा होता है. ब्रेन का जो बेसल पोर्शन है, बेस है, वो इस पे लाई करेगा. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोफिशियल फोसा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी फोसा बिकॉज इट कंटेन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेला टर्किका. सेला टर्किका, पिट्यूटरी फोसा और हाइपोफिशियल फोसा. सो द ग्लैंड लाइज हेयर. ओके, द ग्लैंड लाइज हेयर. So the gland lies in the hypophyseal fossa or sella turcica or pituitary fossa, and this fossa is roofed by the diaphragma celli. The diaphragma celli is a layer of the dura mater, is a part of the dura mater. When we'll talk about the dura mater, then I will tell you that there are four parts of the dura mater. One of them is the diaphragma celli. So this hypophyseal fossa is roofed. ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इसकी जो छत होती है, वो डायफ्रैग्मा सेली से बनी होती है. और उस डायफ्रैग्मा सेली के अंदर से इस हाइपोफिसिस सेरेब्राई का स्टॉक जो होता है वो पियर्स करके आता है. द स्टॉक ऑफ द हाइपोफिसिस सेरेब्राई पियर्सेस द डायफ्रैग्मा सेली एंड इट इज़ अटैच्ड अबव टू द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल सिचुएटेड होता है, थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर. तो ये इसके हाइपोफिशियल फोसा के ऊपर की जो छत होती है वो किससे बनी होती है? डायफ्रैग्मा सेली से. सो दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसकी जो ये स्टॉक होती है, ये पूरा बेस ये ऐसे हाइपोफिशियल फोसा के अंदर लाई करता है, और इसके ऊपर ये ऐसे कवरिंग होती है डायफ्रैग्मा सेली, और बीच में ये एक स्लिट होती है. इसमें से इसकी जो ये स्टॉक होती है दिस पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये उसमें से निकल के आती है. और ऊपर क्या होती है? यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल सिचुएटेड होता है. यू कैन सी दिस, दैट इज रिटन इनफंडिबुलर रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. सो ये थर्ड वेंट्रिकल की इनफंडिबुलर रिसेस है. इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी. तो इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल की इनफंडिबुलर रिसेस जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जा रही है, तो इसके जस्ट ऊपर क्या लाई करता है? थर्ड वेंट्रिकल लाई करता है. तो ये क्या होता है कि इसकी जो स्टॉक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, डायफ्रैग्मा सेली को पियर्स करके ऊपर थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द हाइपोफिसिस सेरेब्राई और द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट्स अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड which is situated in relation to the base of the brain. It is also called as master of all endocrine glands as it produces a number of hormones which controls the secretion of other endocrine glands in the body. And where it is situated, the gland lies in the hypophyseal fossa or the pituitary fossa or the sella turcica. And this sella turcica is roofed by the diaphragma celli, and the stalk of the hypophysis cerebri pierces this diaphragma celli, and it is attached above to the floor of the third ventricle. Now, what is the shape of this pituitary gland? The gland is oval in shape, and it measures 8 mm anteroposteriorly and 12 mm transversely. If you measure it anteroposteriorly, आगे से पीछे इसका measurement देखेंगे तो 8 mm का है, और ट्रांसवर्सली इसका जो मेजरमेंट है वो 12 mm का है. सो its breadth is more than its length, and its gland is oval in shape, and its weight is approximately 500 mg. We have already read in thyroid gland, its weight is 25 grams, and its weight is even lighter than the thyroid gland. It is about 500 mg.
Okay, so this was the general features of the pituitary gland. Now next comes the relationships of the pituitary gland. So relations will divide the relationships into three parts: superiorly, inferiorly, and on each side. Superiorly means the structures which are situated superior to this thyroid gland, to thyroid pituitary gland. Superiorly, what is situated? First, we have already read this diaphragma celli. So the layer of the dura mater, that is the diaphragma celli, it is situated superiorly. The second is optic chiasma. The two optic nerves meet the portion where the two optic nerve meet, it is called as optic chiasma. So where it is situated, optic chiasma, it is situated superiorly. This is basically the hypophyseal fossa, and ये जो है आगे हमारे ऑर्बिट से यहाँ से दो ऑप्टिक नर्व्स आती हैं और ये इस हाइपोफिशियल फोसा के ऊपर यहाँ पर आके समवट यहाँ पर क्रॉस करती हैं और वो क्या बनाती हैं, ऑप्टिक chiasma बनाती हैं. तो इसलिए लिखा है यहाँ पे सुपीरियरली, एक तो डायफ्रैग्मा सेली और यहाँ पर ऑप्टिक chiasma भी प्रेजेंट होता है. थर्ड इज द टबर साइनेरियम, क्योंकि जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर जो सिचुएटेड होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है. सो द हॉलो एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज टबर साइनेरियम. सो द टबर साइनेरियम इज सिचुएटेड superiorly. Next is the infundibular recess of the third ventricle. You can see this in this figure. It is shown here. The third ventricle is situated above to the pituitary gland, and this is the recess which is going towards the pituitary gland. It is called as infundibular recess of the third ventricle. So this is the infundibular recess of third ventricle. So what are the superior relationships? First is diaphragma celli. ठीक है, डायफ्रैग्मा सेली इस तरह से डायफ्रैग्मा सेली ऐसे होती है और ये यहाँ तक इसको कवर करती है, तो सुपीरियरली डायफ्रैग्मा सेली होता है. और ऑप्टिक chiasma होता है, ये दिस इज शोन हियर ऑप्टिक chiasma. दोनों ऑप्टिक नर्व्स आके जो है वो मीट करती हैं, ऑप्टिक chiasma. थर्ड इज टबर साइनेरियम, द हॉलो एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस. एंड द फोर्थ वन इज infundibular recess of the third ventricle. This is the infundibular recess of third ventricle. Now next comes what are the inferior relationships. In the inferior relationships, there is hypophyseal fossa in which the pituitary gland lies, and the sphenoidal air sinuses. You can see this. I've shown you this pituitary fossa, and this is actually what this pituitary fossa is situated basically in sphenoid bone. So this is the body of the sphenoid bone. These are the wings of the sphenoid bone. So under this body, this is the body, the center part, और इसके नीचे की तरफ sphenoid bone में sinuses present होते हैं, which are called as sphenoidal air sinuses. And this hypophyseal fossa is also lined by the double layer of the dura mater, and in between those two layers of the dura mater there are present irregular venous channels. Here it is written na, the irregular venous channels between the two layers of the dura mater which lines the floor of the hypophyseal fossa. तो hypophyseal fossa का जो floor है वो dura mater से बन रहा है, और hypophyseal fossa का जो roof है वो diaphragma celli से बन रहा है, वो भी एक dura mater का part है, but वो special name है उसका diaphragma celli. So these are the irregular venous channels between the two layers of the dura mater which lines the floor of the hypophyseal fossa. Next is the hypophyseal fossa itself, and third is the sphenoidal air sinuses. They are situated inferiorly, the inferior relationships, and on each side the cavernous sinus with its contents. Cavernous sinus, this is the pituitary fossa. On each side here the two big sinuses are present, that is the cavernous sinus. So this cavernous sinus is situated on each side of the pituitary gland. So okay, so these are the relationships of the pituitary gland. Again I am repeating: superiorly, inferiorly, and on each side. Superiorly there lies diaphragma celli, which is the layer of dura mater. Second, optic chiasma, the part where the two optic nerves meet. Third is tuber sinarium. Tuber sinarium is the hollow eminence of the hypothalamus, as hypothalamus is situated above to the pituitary gland. And the fourth is infundibular recess of the third ventricle. This is shown here, infundibular recess of third ventricle. Now inferior relationships. In inferior relationships, it lies the two layers of the dura mater which lines the floor of the hypophyseal fossa, and in between them the irregular venous channels are present. So it is lies inferior to the pituitary gland. Second is hypophyseal fossa, and the third one is sphenoidal air sinuses. Sphenoid bone which sinus present होते हैं, that is sphenoidal air sinuses. Next is on each side the two big sinuses, that is cavernous sinus
with its contents. Okay, so these are the relationships of the pituitary gland. In the next section we'll read about the subdivisions or the parts of the pituitary gland. So till then, all the best, and just read it properly, as it is a very important gland from exam point of view. It comes in second paper of anatomy for 15 marks question or 10 marks question, and also comes as a short note. Okay, so carefully read it, and we'll talk about its parts and development in the next section. Okay, and all the best.